हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू लेसन नंबर 84। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड वोकैबुलरी। स्पोकन बाय सिल्वेस्टर स्टैलोन, हॉलीवुड एक्टर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्पायरिंग स्पीच फ्रॉम द हॉलीवुड मूवी रॉकी बल्बोआ। लेट मी टेल यू समथिंग यू ऑलरेडी नो, द वर्ल्ड एंड ऑल सनशाइन एंड देन वे। It's a very mean and nasty place, and I don't care how tall you are. It'll beat you to your knee and keep you there permanently if you let it. You, me, and nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you could take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you are worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers. Saying you and where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and you're better than that. तो ये था रीडिंग और वोकैबुलरी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। एंट्रिट का मतलब होता है आस्क समवन ईयरनेसली और एंसियसली टू डू समथिंग, विनती करना। सिमिलर वर्ड है अर्ज या रिक्वेस्ट। सो फर्स्ट वोकैबुलरी है एंट्रिट। सेकंड पे चलते हैं मैलिस, द डिजायर टू सी अदर सफर। द्वेष भी कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड है हैट या बिटरनेस, आप बोल सकते हैं मैलिस से। सेकंड वोकैबुलरी। थर्ड है देखिए एजल्ट का मतलब होता है प्रेज या ग्लोरीफाई या ऑनर, प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई या प्रेज आप बोल सकते हैं। तो ये था रीडिंग वोकैबुलरी। सो मिलते हैं लेसन नंबर 85 में। थैंक यू एंड बाय दोस्तों।